ऊपर मैं आप हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स का हमारा आज का टॉपिक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स जो है हमारा डिसाइडेड करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस under the Department of Revenue. Department of Revenue Revenue right is classified into two types. First of all, CBDT, Central Board of Direct Tax, and another is CBIC. Yeah. CBDT, Central Board of Direct Tax, of direct tax. And CBDT, and the Central Board of Indirect Central Board of Indirect Tax and Custom. Indirect Tax and Custom. क्लियर? CBIC, इसको हम कहेंगे CBIC. राइट. अब CBDT के अंडर आता है बेटे इनडायरेक्ट टैक्स, सो इनकम टैक्स, right, and covered under section 1961, 1961, and CBIC classify into two types. Is GST, goods and service tax, and custom.
and custom. Right. क्लियर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में और बेसिक नॉलेज देते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ये 7 शेड्यूल में भी जाता है. 7 शेड्यूल of article 246. आर्टिकल 246 में इसको डिफाइन किया गया है. राइट. इसमें 3 तरीके की लिस्टें रहती हैं हमारी. लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3. 3 तरह की लिस्ट को हम क्लासिफाई करते हैं बेटे. फर्स्ट इज लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड थर्ड वन इज लिस्ट 3. लिस्ट 1 में हमारा लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड एंड लिस्ट थर्ड. लिस्ट फर्स्ट cover central of union list, central of union list, while list second is cover state list. इसमें स्टेट के पास पावर होती है टैक्स लगाने की. And similarly, list third is cover concurrent list. Concurrent list. List. Right? अब बेसिक रूल ऑफ इनकम टैक्स, बेसिक प्रिंसिपल सेक्शन 4 के अंदर क्या डिफाइन किए गए हैं, मैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूं. वैसे तो आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ चुके होंगे. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 4. Basically, it is classified into 3 types. First is income tax on the previous year. Income tax
on the previous year of a person charged to tax immediately preceding preceding to previous year नहीं, following assessment year. Clear? And then second point is tax deducted at source or paid in advance and rate of tax specified rate of tax is specified by Annual Finance Act, Annual Finance Act, and Income Tax Act itself prescribed specific rate, राइट? ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो अंडर सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किए गए हैं. फर्स्ट is income tax charge, income tax on the previous year of a person charged to tax immediately following assessment year. Another is tax deducted at source or paid in advance, TDS हम कहेंगे, and then rate of tax is specified by Annual Finance Act, and the income tax itself prescribed specific rate, right? अब ये कौन कौन से स्पेसिफिक रेट हो सकते हैं हमारे? टैक्स ऑन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए टैक्स ऑन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. ठीक है? It is classified into 3 parts. Up to 60 year, 60 year, मेल हो या फीमेल हो. Second one is above 60 year but less than 80 year.
right? And then third one is more than 80 years. More than 80 years. इनको हम कहेंगे सुपर सीनियर सिटीजन. सुपर सीनियर सिटीजन. ठीक है. इसके इसमें बेटे टैक्स रेट लिखते हैं हम लोग. फर्स्ट ₹2,50,000. Tax rate is nil. Next, ₹2,50,000. Tax rate is 5%. And then next, ₹5 lakh. Tax rate is 20%. And then balance is 30%. Right? And then in case of senior citizen, the tax rate is first rupee 3 lakh. Tax rate is nil. And next, rupee 2 lakh. Then tax rate is 5%. And then next, rupee 5 lakh. Then tax rate is 20%. And then balance rupee balance. More than 10 lakh. The tax rate is 30%. Similarly, in the case of super senior citizen, the tax rate is first rupee 5 lakh. This will be nil. And then next, rupee 5 lakh. This is 20%. And then balance is 30%. This is tax rate. Clear? क्लियर. आइए अब मैं सरचार्ज के बारे में बताता हूं. जो सरचार्ज हमारे रेट लगेंगे, सरचार्ज the rate of surcharge five type of surcharge five type of surcharge are giving. Up to rupees 50 lakh, up to rupee 50 lakh, there is no surcharge.
surcharge rate is nil. And then more than 50 lakh, but less than 1 CR, and then third one is more than 1 CR, but less than 2 CR, sorry, पहले आएगा 2 CR, 2 CR, and then more than 2 CR, but less than 5 CR. एक और स्लैब रेट है यहाँ पर, और इस income is more than 5 CR, more than 5 CR, then the slab rate is different. Up to 50 lakh, the slab rate is nil. Then more than 50 lakh, but less than 1 CR is the slab rate is, surcharge rate is 10%. Surcharge rate is 10%, right? And then more than 1 CR, income is more than 1 CR, and then but less than 2 CR, the slab rate is, the surcharge rate is 15%. And income is more than 2 CR, but less than 5 CR is slab rate is 25%. And more than 5 CR income is slab rate is 37%. अब इसमें हमारा HEC आएगा आपका, इसमें HEC higher education cess is 4%. इनमें हायर एजुकेशन सेस लगेगा 4%, ठीक है। देन आइए अब मैं आपको टैक्स रेट कैलकुलेट कराता हूँ। ये तो इंडिविजुअल एचयूएफ का था हमारा, अब हम लोग टैक्स रेट देखते हैं यहाँ पर। टैक्स ऑन कंपनी, कंपनी का टैक्स रेट। कंपनी तो यहाँ दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, डोमेस्टिक कंपनी और दूसरा हमारा का फॉरेन कंपनी। Company is classified into two parts. First is domestic company. Domestic company. Second one is foreign company.
In domestic company, the tax rate is classified into two parts. Opted opted section 115 BA. Opted section 115 BA, right? And then it is further classified into two parts. Is good. And not opted. It will be not opted under section 115 BA. आप ऑप्ट कर रहे हो BA को या नहीं कर रहे हो? अगर आप BA को ऑप्ट कर रहे हो तो हम इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। दोनों ही केसेस के दो दो पार्ट होते हैं हमारे। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। सेक्शन कवर सेक्शन 115 BAA। 115 BAA और सेक्शन 115 BAB, राइट। इससे रिलेटेड है बताता हूं मैं आपको। इसमें बेटा टैक्स रेट रहेगा हमारा 22%। टैक्स रेट इज 22% और यहाँ पे टैक्स रेट होगा हमारा 15%। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे इसके अंदर हमारी। इसमें बेटे डज नॉट क्लेम लिखेंगे हम लोग। डज नॉट क्लेम सेक्शन 115 BAA के अंदर डज नॉट क्लेम any specified deduction exemption and depreciation। इसमें कोई भी क्लेम नहीं ले सकते हम लोग। एंड अंडर सेक्शन 115 BAB के अंदर द टैक्स रेट इज 15%। और यहाँ ये जो है ये जो अवेलेबल होगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, incorporate in India after 1st October 2019, राइट। अब हम लोग अगर नॉट ऑप्टेड करते हैं 115 BA को, अगर ऑप्ट करते हैं तो उसमें दो रेट बनते हैं 22% और 15% के अंदर। और अगर हम ऑप्टेड नहीं करते तो यहाँ पे भी दो केस बनेंगे। फर्स्ट इज
टर्नओवर, लिखेंगे टर्नओवर is less than or equals to 400 CR, और यहां पर आ जाएगा, टर्नओवर is more than 400 CR. is less than 400 CR है, तो हमारा बेटा टैक्स रेट रहता है यहाँ पर 25%, और अगर मोर देन 400 CR है तो टैक्स रेट इज 30%, टैक्स रेट इज 30%. Then, but in case of foreign company, tax rate is 40%. Tax rate is 40%. ये है हमारा पूरा कंपनी का टैक्स स्ट्रक्चर. अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, सरचार्ज ऑन कंपनी. कंपनी पे सरचार्ज कैसे लगेगा हमारा, सरचार्ज रेट क्या है. ऑन कंपनी. अब सरचार्ज और कंपनी के अंदर हमारे रेट रहेंगे. इसको भी मैं दो पार्ट में क्लासिफाई करूंगा. फर्स्ट इज डोमेस्टिक कंपनी एंड अनदर इज फॉरेन कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी and another is foreign company. In case of domestic company, it is further classified into two parts. If income is more than 1 CR, but less than 10 CR, and then income is more than 10 CR, the surcharge rate is, in first case, the surcharge rate is 7%, and second case, if income is more than 10 CR, the surcharge rate is 12%. Right? Similarly, in case of company, in case of foreign company, it is further classified into two parts. Further classified into two parts. First is income is more than 1 CR, but less than 10 CR. और यहाँ पे टैक्स रेट is 2%, and then income is more than 10 CR, the tax rate is 5%. Tax rate is 5%.
आइए नेक्स्ट पॉइंट और एक और मैं आपको टैक्स रेट और बताता हूँ बेसिक्स। टैक्स ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्स ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी। It is further classified in two parts. Opted 115 BAD, section 115 BAD does not follow. Section 115 BAD does follow. If section 115 does not BAD does not follow, the tax rate is tax rate is the tax rate is first rupee 10,000, first rupee 10,000. The tax rate is 10%, and next rupee 10,000, the tax rate is 20%, and then balance the tax rate is 30%. 30%. And surcharge is applicable more than 1 CR, more than 1 CR, income is more than 1 CR, the tax rate is 12%. Tax rate is 12, sorry, surcharge is 12%, right? And then if section 100 BAD does follow, the tax rate is 22%. Tax rate is 22%, and surcharge is more than 1 CR. Like this 1 CR तो कुछ कोई surcharge है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर more than 1 CR है तो surcharge is in this case is 10%. Surcharge is 10%, right? और HEC 4%.
HEC is 4%, right? आई इसके अतिरिक्त हम लोग और देखते हैं यहाँ पे टैक्स रेट। राइट, आई टैक्स रेट, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। It is classified, it is classified into two parts. If it is covered under section 112, under section 111, sorry पहले आपका 111A, right, and cover under section 112, right. In under section 111A, the tax rate is 15%. Tax rate is 15%. And under section 112, it is further classified into two parts. Further classified into two parts. Right. एक first is under section 112, under section 112, and another is under section 112A, right? If it is covered under section 112, the tax rate is 20%. Tax rate is 20%, right? And then cover 100 under section 112, the tax rate is 10%. Tax rate is 10%, right? But इसमें two condition are arises. Two conditions are arises. कुछ important note लिखेंगे हम लोग यहाँ पर. Note. First note is deduction under section under section 80 C2 80U shall not allowed, right? This is first case. And then second case is if income exceed rupee 1 CR, surcharge will be 15%. ठीक है, यहाँ 15% से ज्यादा नहीं रहेगा सरचार्ज, राइट। उसके साथ साथ एक और हम लोग टैक्स रेट पढ़ते हैं यहाँ पे, टैक्स ऑन फर्म LLP लोकल अथॉरिटी, टैक्स ऑन फर्म LLP and local
authority. Right. Here, taxate is tax rate is or surcharge. Tax rate is 30% and surcharge is more than 1 CR. More than 1 CR is 12% or HEC is 4%. Here HEC is 4%. ओके, आपको ये सारे टैक्स रेट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।